Hi, sir. Good evening, sir. Hello. Isn't you fix your mic yet? Shahid, hello Rukaiya. Can you hear me now? Yeah, Yes, very yes, clear. we can. Okay, yes. All right. Hello Imrana. Good evening, sir. Evening, beta. Good evening, sir. Hello Faizan. I'm going to do something very important today for you all. English is not just English. There is something called natural English and there is something called correct English. I'm going to show you, compare the two stories I shared. I hope you guys have read those stories. Did you notice something about the stories? What did you notice? If you did notice something. I don't know if you were capable of noticing the difference in the language, in the register of the language. Let's start with the first story. The Voice of Conscience. The title itself can be translated very easily into Hindi. What is the title? The Voice of Conscience. क्या है इसकी हिंदी? Conscience, conscience नहीं, conscience. What is the Hindi of this? The Voice of Conscience? इसको कहेंगे ज़मीर की आवाज. ज़मीर की आवाज. अब थोड़ा let's focus on the language. Outside Algu Chaudhry's house, Algu is sitting and reading the paper. Jumman Sheikh walks in. Salam Algu bhai. Thank you for looking after my house and farm while I was away on Hajj. हिंदी की इंग्लिश लगी कि नहीं लगी? Simple हिंदी की इंग्लिश? You are my friend, Jumman. I would do much more for you. Anyway, would you not do the same for me if I had to travel out of the village? लग रहा है कि हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश में लिखे हैं? That I would, Algu. We have been friends since my father used to teach us at the village school. Sorry. That I would do, Algu. Come, let's join the others in the village square. Come, let's join the others in the village square. They leave together, talking and smiling. Kariman is standing near the entrance of her house, talking to a neighbor, Benita. Khalajan is sitting and grinding the grain. Kariman. It has become so difficult to make ends meet since Khalajan moved in with us. She has no idea of the cost and keeps asking for all kinds of luxuries. Really,
One would expect someone so old to have simpler tests. But has she not given your husband all her land? Huh, those barren fields, they are completely useless. And with the money we have to spend on her, we could have easily bought the entire village by now. Who knows till when she will live? पता नहीं कब तक जिएगी ये बुढ़िया. Khalajan has been listening to this with growing anger and sorrow. Juman walks in. Juman beta, I've had enough of these taunts. Juman beta, I've had enough of these taunts. Let me pass my old age in peace. मुझे मेरा बुढ़ापा शांति से गुजारने दो. चैन से गुजारने दो. I cannot live here any longer. अब हम यहाँ नहीं रह सकते. And listen to these insults. और इतने बेइज्जती नहीं झेल सकते. Give me a monthly allowance and I'll find myself a small place and live by myself. You see how ungrateful she is? After all we have done for her. Where is the money to come from, Khalajan? पैसा कहाँ से आएगा? Do you think it grows on trees? After all, no one expected you to live forever. You just be grateful that you are getting 2 meals a day and a bed to sleep in. I've had enough of this. I'll call a panchayat and we'll settle this once and for all. Very well, do that. I too am sick of these constant quarrels and will abide by the decision of the panchayat. The panchayat will surely decide in my favor. After all, the villagers are obliged to me. So this is a famous story written by a great Hindi storyteller, Premchand. It is his story called Panch Parmeshwar, which is translated into English. आप देख सकते हैं कितने ज्यादा idiomatic expressions use किए. देखो क्या क्या है मैं बता दूं. Make ends meet. It's become so difficult to make ends meet. No one expected you to live forever. Will abide by the decision. जितनी भी आप language पढ़ रहे हैं, आप इस language को compare करो. Maybe I should read one more page before I move on to the comparison. All the villagers are assembled in the village square. 4 villagers and Algu Chaudhary are seated in the center as the 5 panches or village elders. Everyone is talking and there is much noise. Silence. The panchayat is now in session. Speak, Khalajan. Why have you called for a meeting of the panchayat? Silence descends on the crowd. Khalajan, 3 years ago, I transferred my entire property to my nephew, Juman Sheikh. In return, he promised to look after me, but only I know how miserable I have been these past years. I get neither enough food nor decent clothes. I am rebuked and taunted day and night. I am alone and helpless in this world. Whatever you will advise me, I will do. If I am at fault, pull me up. If Juman is at fault, reason with him. जैसे भी करके वो बात को एक्सप्रेस कर दी गई, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अगर मेरी गलती हो तो हमको बोलो, अगर जुम्मन की गलती हो तो उसको समझाओ. ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, हमारी मदर टंग है. To both Jumman and Khalajan, whom do you appoint a sarpanch? Let Khalajan choose the sarpanch. After all, she called the panchayat. Beta, the members of the panchayat are no one's friends or enemies. If you do not trust the other men in the panchayat, let them be. You trust Algu Chaudhary, don't you? Well, I appoint him the sarpanch. I appoint him the sarpanch. देखो क्या लिखा? I appoint him. मैं उसको appoint करती हूँ. I appoint him. Luck is on my side now. The case will surely go in my favor. Khalajan, you know I am Juman's friend. It doesn't matter, son. A punch is above friendship and enmity. It is God who speaks through him. तो जब आप ये चीज कर सकते हैं, अब इसको कंपेयर करिए with this story. आप जरा देखिए, भाई हिंदी करके दिखाइएगा मुझे आसानी से, ठीक है? करके दिखाइए प्लीज. An important room, this.
cried Mr. Wonka, taking a bunch of keys from his pocket and slipping one into the keyhole of the door. This is the nerve center of the whole factory, the heart of the whole business, and so beautiful. I insist upon my room being beautiful. I can't abide ugliness in factories. बताओ यहाँ इतनी लाइन जो इसने बोले 4 लाइन बोले ना करो हिंदी. This is the nerve center of the whole factory, the heart of the whole business, and so beautiful. I insist upon my room being beautiful. I can't abide ugliness in factories. करो वर्ड्स को ट्रांसलेट. वहां तो शब्दों को ट्रांसलेट किए जा रहे थे और हिंदी आई जा रही थी. अब करो. कर पा रहे हो नहीं ना? क्योंकि इसको लिखने वाले को हिंदी नहीं आती थी. इस स्टोरी को लिखने वाले को हिंदी नहीं आती थी. अच्छा यहाँ पे सिग्नेचर में तौकीर नवाज लिखे तो कौन है आप लिखे ना. अच्छा now you are in the class topic. Yes, but be careful. In we go. In we go then. But do be careful, my dear children. Don't lose your heads. Don't get overexcited. Keep very calm. अभी लगा जरा भी लगा हिंदी में से कोई वर्ड ऑर्डर आता है हम लोग का नहीं आया ना. कंपेयर कर रहे हैं ना. दो अलग अलग इंग्लिश दोनों है लेकिन दोनों में फर्क है. Let's continue. Mr. Wonka opened the door. 5 children and 9 grown-ups pushed their ways in. pushed their ways in, and oh, what an amazing sight it was that now met their eyes. They were looking down upon a lovely valley. There were green meadows on either side of the valley, and along the bottom of it flowed a great brown river. What is more, there was a tremendous waterfall halfway along the river, a steep cliff over which the water curled and rolled in a solid sheet and then went crashing down into a boiling, churning whirlpool of froth and spray. ये समझना मुश्किल लग रहा है थोड़ा. लग रहा है. Below the waterfall, and this was the most astonishing sight of all, a whole mass of enormous glass pipes were dangling down into the river from somewhere high up in the ceiling. They really were enormous, those pipes. There must have been a dozen of them at least, and they were sucking up the brownish muddy water from the river and carrying it away to goodness knows where. And because they were made of glass, you could see the liquid flowing and bubbling along inside them, and above the noise of the waterfall, you could hear the never-ending sucking sound of the pipes as they did their work. Graceful trees and bushes were growing along the river banks, weeping willows and alders and tall clumps of rhododendrons with their pink and red and mauve blossoms. क्या फर्क महसूस हुआ दोनों भाषाओं में? एक है हिंदी की इंग्लिश और एक है इंग्लिश, राइट? तो वो भी स्टैंडर्ड करेक्ट इंग्लिश है जो आपने पहले पढ़ा, उसमें भी सारे ग्रामर रूल्स का ख्याल रखा गया. But anybody who doesn't know Hindi, if they read that text, they are going to feel a little uncomfortable with that language, uneasy with that language. If you share that text with some of your Japanese friends, Chinese friends, Australian friends, American friends, friends from outside India who do not speak Hindi, the first story, share them, okay? Share the story with them and ask them for the feedback. How did they feel about the language? If you ask an American or an Englishman, all right, an Australian, South African, they'll say, this is not how we write English. They will say to you. Now, if a student reads this kind of English, the second story is English, they will slowly and slowly get used to this kind of English as well. And those who read the first story and that kind, such a story, more such stories, they will get used to the translation of Hindi. Well, Hindi is our mother tongue. We cannot evade this fact. We cannot ignore that Hindi is our mother tongue.
But when we are trying to learn English, isn't it necessary that we try and stay as close as possible when we are trying to learn English to English instead of English of Hindi? I brought the two stories for you guys so that you could compare the English in both the stories. There are lovely phrases in the first one as well. But when you try to translate a language into another, you have to make lots of compromises. If it was possible to carry the beauty of one language into another, then everyone who would translate Premchand's stories into English would be as, I will say, successful as Shakespeare, because Premchand is a magician, with words. He writes stories and he creates such emotions with those words. People love his stories. Shakespeare enjoyed the same kind of, reputation in English. But if somebody translates Shakespeare's stories into Hindi, they will not be able to create the same magic. The story will remain the same, of course, but they will not be able to create the same magic with words. These writers became popular, famous, not just because they wrote some stories, the way they wrote those stories. The same stories were rewritten, created in films and everything. But then there is something that is called the treatment, how how good you are at your own craft. A director can spoil, a bad director can spoil a lovely story. And an excellent director can make a lovely film with a very average and ordinary story because of his direction, right? So similarly, these writers, authors, they were magicians with words. Shakespeare could use English words that way, and Premchand could use Hindi words that way. Why am I sharing all of these things suddenly? Because your friend, Nikhil asked me a couple of questions in the morning, and I'm not very sure whether he will understand what I'm saying right now. The sentences that he asked me were the Hindi sentences, beautiful Hindi sentences. Uska sir phat gaya. Okay. Now, sir phatna. Okay. Iska sir phat gaya. मैं कल मेला घूमने गया था. Now, what you're doing, you're taking out sentences from Premchand's stories, because these type of sentences exist in Premchand's stories, right? Because he was a magician with Hindi words. So when you speak English, you do not think of translating these words, otherwise you'll get that kind of English. So मैंने translation बता दिए उसे, okay? But I just want to tell you all, आप जब इंग्लिश पढ़ते हो तो क्या सुनते हो सिर फटना के लिए? आपने कौन सा लाइन सुना होगा? आज तक सुना तो जरूर होगा, कई स्टोरीज देखी होंगी, मूवीज देखी होंगी जहां किसी का सिर फट गया होगा, राइट? उसने क्या, उसको कैसे एड्रेस किया? उनको नहीं पता कि हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो बोलते हैं सिर फटना. वो उस बात को दूसरे अंदाज से डिस्क्राइब करते हैं. आप फिल्में देखिए, ऐसी फिल्में ढूंढ के लाइए जहां पर किसी को सिर में चोट लगा, फट गया उसका सिर, उसके बारे में बात हो रही हो. प्लीज, आपको मैं ये दे रहा हूं, क्या कह सकते हैं आप उसको, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्ट वर्क. ओके, कि आप ऐसे फिल्मों के सीन ढूंढें जहां किसी का सिर फटा, उसके बारे में बात हो रही है. सब लोगों को दे रहे हैं ताकि सब लोग कुछ सक्सेसफुल हो पाए. ठीक है, देखते हैं कौन कितना बढ़िया ढूंढ के लाता है, कौन सा सीन. कोई मूवी का सीन, इंग्लिश मूवी का सीन, अगर आपने इंग्लिश फिल्म में देखी है, कोई याद आ रहा हो कि इसमें सिर फटा था, वहां बारे बारे बात हो रही थी. ठीक है, नहीं तो आप गूगल करें इंग्लिश मूवी सीन विद हेड इंजरी, इंग्लिश मूवी सीन, इस तरह के कुछ वर्ड्स करके गूगल करें, सर्च करें, देखें कहां पर आपको कुछ ऐसा सीन मिलता है और उसके बारे में बात होते हुए मिले. फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा ऑर्डर आप महसूस किए ना, वो हिंदी इंग्लिश, अचानक से इंग्लिश बदल गई पूरी तरह से ये वाली, क्योंकि ये लिखे रोल डैल इंग्लैंड के थे, उनको हिंदी का कोई अंदाजा नहीं था, तो वो इंग्लिश लिख रहे थे, इंडिपेंडेंट इंग्लिश.
और ये किसी हिंदी जानने वाले ने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में प्रेमचंद की स्टोरी को। तो जब आप अपने शब्दों को, हिंदी के शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे तो आप अच्छे से करेक्ट हो सकते हैं, जो मैंने कर दिया, करेक्ट कर दिया मैंने ट्रांसलेट, बट ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही साउंड करेगा जो इंग्लिश में साउंड करना चाहिए। अंग्रेज को अगर ये बात बोलनी होगी तो कुछ और तरीके से बोलेंगे, और वो क्या क्या बोलेंगे ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है ढूंढ के लाने का। ये देखिए कैसे कैसे बातें करते हैं इस बारे में। मैं क्यों कर रहा हूं ये चीजें, ताकि आपको पता चले कि जब तक आप मगही और बिहारी को इंग्लिश ट्रांसलेट करने में उलझे रहेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। जब मैंने उनको उनके कुछ सेंटेंसेस बोले लिखने के लिए और उन्होंने जो गलतियां की, उन गलतियों के बारे में मैंने बात की, तो बहुत ही आराम से बोल रहे हैं वो कि मैंने इन सब बारे में सब मुझे पता ही नहीं, क्या होता है ट्रांजिटिव, क्या होता है क्या कहते हैं उसको, कंपैरेटिव, ये सब मुझे पता ही नहीं। तो पता नहीं तो आप एक जगह नहीं 50 जगह गलतियां करने वाले हो, क्योंकि कुछ बेसिक का आइडियाज होते हैं जो आप एलिमेंट्री और प्री इंटरमीडिएट में ही कर चुके होंगे, खत्म कर देंगे इतने में ही, 2 ही लेवल पे। कल मैंने आपको बताया था A1 A2 B1 V2 C1 C2, 6 लेवल्स, राइट। आप 2 ही 3 लेवल में ये सब चीजें क्लियर कर लेते हैं, और वो आइडिया नहीं आपके अगर दिमाग में, जो 2 3 लेवल में खत्म हो जाएंगी, B1 तक में खत्म हो जाएंगी, आपके दिमाग में अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आप कभी भी गलतियां करोगे सर। बस खाली जगह फंसने भर की देर है, आप उलट पलट कर जाओगे पूरा, क्योंकि आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है। मैंने जब उनको ट्रांसलेट करने के लिए कहा तो उन्होंने जो ट्रांसलेशन किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने कुछ और सेंटेंसेस पूछे थे जो मैं आपके सामने रखता हूँ, गिव मी अ सेकंड। और वो होने वाले थे आज क्लास में, ही सेड ही वुड बी हियर बट ही इज नॉट, ऑब्वियसली ही इज बिजी। तो ध्यान रखना कि किसी भी फील्ड में अच्छा होने के लिए जबरदस्त डेडिकेशन देना पड़ता है। एक अच्छा सिंगर सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करता है, रियाज करता है यार। एक अच्छा डांसर उठने के साथ सबसे पहले क्या करता है, डांस का रियाज करता है। तो अगर आप अच्छा होना चाहते हो देन यू हैव टू बी रेडी टू पुट इन सम एफर्ट्स। मैं हमेशा एक चीज से घबराता था जब मैं यंग टीचर था, तो मेरे अंदर एक फीलिंग थी, मैं सबके सामने बोल चुका हूँ कई बार, मुझे लगता था कि मैं अंधों में कनवा राजा हूँ। क्या हूँ, अंधों में कनवा राजा, सुना है ना, अंधों में काना राजा, राइट। तो नहीं सुना कभी तुमने ये फ्रेज? हाँ हाँ, तो इसकी हिंदी भी पूरी है, इसने नहीं सुना है तो। अंधों में काना राजा, जब जहाँ सारे लोग अंधे होते हैं एक आंख वाला भी क्या होता है, राजा कहलाता है कि भाई भाई बहुत उज्जवल। तो वैसे ही जहाँ कोई कुछ नहीं जानता वहाँ थोड़ा सा जानना भी, मैं इस बात से बहुत घबराता था कि मैं ऐसा ना बन के रह जाऊं। इसलिए आई नेवर competed विद पीपल इन बिहार शरीफ बिकॉज आई न्यू देयर स्टैंडर्ड्स। अगर कोई 2 फीट छलांग लगा रहा है, तुम उनके साथ प्रैक्टिस करते हो तो तुम 2.5 फीट छलांग लगा के खुश रहोगे ना, क्योंकि बाकी सब तो 2 ही फीट में उलझ रहे हैं, तुम 2.5 फीट में लगा रहे हो, तुम 4 फीट जाने का मोटिवेशन ला पाओगे एज लॉन्ग एज यूर विद देम? नो। So I told you all these things that I definitely set my standards up there because I know the standards are teaching here in my town here, what people do. Take a look. कुछ sentences थे, थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है. Is it such a difficult sentence to translate? Why would you even ask? Yes. It means somewhere you have got problem in the way you're thinking about English. थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है. It means you're not okay, you're unwell. But no, somewhere you believe that there will be words which will justify this Hindi, which will be equivalent to this Hindi, just like the Premchand story translated into English. That's why I brought those stories to you guys, to show you there is English and there is English of Hindi. Now, the choice is yours, which you want to learn. This translation of Premchand's story is not going to be taught in any country as an English lesson. I can assure you that.
No English school will ever use that story as a lesson. Why is that? Because it sounds natural to us Hindi speakers. To people in America and in Australia and England, that story will sound a little strange. That will not sound very natural. Okay. Have you ever read a Hindi story which was not actually written in Hindi? It was translated into Hindi by somebody and literally translated. Have you ever read any such a story? That's why you are not aware. You will read one of those stories and you realize ये cheap लग रहा है हिंदी पढ़ने में, ऐसे तो नहीं लिखते हम लोग हिंदी. Because it will be translated from another language. Oh, good question. The second story is from a very popular children's book called Charlie in the Charlie. Champak is not an English book. Okay. Charlie and the Chocolate Factory. देखिए, सीखना एक प्रोसेस है और जितना अच्छा गाइड, कोई भी काम आप एक हीरे को तराशना सीख रहे हैं, तो आपका जितना अच्छा ये होगा उस्ताद, वो बताएगा देखो यहाँ पर ऐसे कट लगा सकते हो, यहाँ ऐसे, तो आप उतना बेहतर. अगर कोई मोटा मोटा तराशना जानता है तो मेन बातें नहीं बता सकेगा आपको, ऑब्वियसली. तो बहुत सी चीजें अभी उन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ है, एक फोटो भेजा था, उसमें कुछ और भी चीजें लिखी हुई हैं. तो आई एम गोइंग टू Faizan, you're writing yes sir to what? I see your yes sir here in the group, in Yes, on my sir. WhatsApp, but I don't know Just what you you mean. said. What did I say? About language, sir. About which part? Language. I've been talking about language. Which part? Lots. You're talking about lot. Much. Lots of parts, sir. One Your of reaction was one of which part is important. Like you read someone who already knows very well English, just not translated English, and we are शुरू तो always. तुमको वहां करना पड़ेगा. I have to accept that. शुरू तो तुम्हें वहां करना होगा. When you start now, you of course have to take reference from your language all the time. But as you move further and further and further, then you slowly and slowly leave your language behind and you start being more comfortable with this new language you have learned. When you listen to people speak Hindi, you will find all kinds of people who will just speak very bad Hindi because they have spent little time, okay? And there will be some people who will speak wonderful Hindi. Except for their accent, you won't notice anything strange about the way they use the words. It means they have spent more time, they have learned more carefully, okay? So the same is in our hands. Future is in your hands, you see? How you decide to speak, how much hard work you put in. It's not impossible, but yes, you have to try very hard. Okay, he has written a phrase here, focus on study. Focus on
ये बात कई कई लोगों के मुंह से सुनोगे। पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस ऑन, ठीक है। तो मुझे पूछना है कि ये सेंटेंस, ये लाइन सही है कि गलत है, और इसमें अगर गलत है तो क्या गलत है। अभी तुम नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास खत्म होते होते तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो और क्या था, थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है तो मैंने इसकी इंग्लिश कर दी, वेरी सिंपल। आई एम अ बिट अनवेल, आई एम अ बिट अंडर द वेदर। ओके, ओके। उन्होंने अपनी तरफ से लिखा था अ लिटिल हेल्थ इज बैड। लिखा, ये कोई इंग्लिश नहीं है, और ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर आप इस तरह की गलतियां करेंगे तो फिर ये वाला बात हो गया कि कोई आप यू आर मर्क्यूरियल, कि कभी ठंडा कभी गर्म, कभी यहाँ कभी वहां। कभी आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल दोगे और कहीं पर आप ऐसा ही बोल दोगे लिटिल हेल्थ इज बैड। मेरे मुंह से कभी नहीं है इंग्लिश निकलनी, आपके मुंह से निकलनी है इंग्लिश लिटिल हेल्थ इज बैड। कभी दारू पी के नहीं सर, नहीं बोल पाएंगे हम ऐसे इंग्लिश लिटिल हेल्थ इज बैड। ये मेरी इंग्लिश थी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, राइट। आपके नहीं, बचपन में रही होगी लिटिल हेल्थ इज बैड, बोलते ही नहीं थे। चलिए, भी ऐसा ही है। हाउ विल आई से मेला गया बट अच्छे से नहीं घूमा। तो आप क्यों चिपकना चाहते हैं हिंदी के शब्दों से, सवाल ये है। क्या आपको ये एक्सप्रेस करने का कोई आइडिया नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है उसमें, मैं आप सब लोग को बोलूंगा, ठीक है। यही चीज रोक के रखता है हम जैसे हिंदी बोलने वालों को इंग्लिश सीखने से, क्योंकि हम अपनी हिंदी से चिपके रहना चाहते हैं। हम बोलते हैं हम इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं, लेकिन हम इंग्लिश सीखना ही नहीं चाहते हैं। हम हिंदी को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश नहीं बोलना चाहते। मेला गया अच्छे से नहीं घूमा, जब मैंने उसकी ट्रांसलेशन दी उनको, आई विजिटेड द फेयर बट कुडंट रियली सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि सर I understand this, but it can be said in other ways also, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑफ कोर्स आप बहुत सारे तरीके से एक बात को बोल सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। तो जब मैंने उनको एनकरेज किया तो उन्होंने एक लाइन लिखा, I went to a fair trip but couldn't enjoy more. I went to a fair trip but couldn't enjoy more, ठीक है। तो जब आप ऐसे इंग्लिश लिखेंगे, आई वेंट टू अ फेयर ट्रिप बट कुडंट एंजॉय मोर, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ गलत बेसिक गलतियां कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मोर कहाँ यूज करते हैं हम लोग? कंपैरिजन। मैंने लिखा कि कंपैरेटिव है मोर, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इस बारे में। मैंने कहा एंजॉय ट्रांजिटिव है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इस बारे में। आप नहीं बोल सकते कांट एंजॉय मोर। एंजॉय के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़े हम लोग इस बात को कि एंजॉय के बाद हर हाल में ऑब्जेक्ट चाहिए। लाइक के बाद आप बोलते हैं आई लाइक मोर, क्या लाइक इट मोर, कुछ तो चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, राइट। एंजॉय के बाद भी आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अपने दिमाग में, ताकि आप इंग्लिश लिखते समय, भले ही वो नेचुरल इंग्लिश नहीं थी, प्रेमचंद की स्टोरी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, बट ग्रामर का ख्याल रखा गया हर जगह पे। आप इस तरह से अपने ग्रामर को बाय बाय नहीं बोल सकते इंग्लिश लिखते समय, इंग्लिश ग्रामर को बाय बाय नहीं बोल सकते। देन नोबडी विल रिस्पेक्ट योर इंग्लिश, यू विल नेवर, अनलेस मैं बता रहा हूं, इंग्लिश के लिए आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी फिर, सॉरी। नोबडी विल से दैट योर इंग्लिश इज गुड, सॉरी, दोज हु नो इंग्लिश, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए, if you are busy in taking classes, don't worry. मैंने लिखा I'll answer later, getting ready for the next lesson, ठीक है। मैं जहां तक कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को इंग्लिश सिखाऊं, सबसे पहले वो मेरे अंदर होनी चाहिए ना। तो मैं कोशिश करता हूँ, of course I have to accept that I am not a perfect example because I'm not an Englishman, right? But I am trying my best even today to be as close as possible to them. And every day, every year passes and I'm a little better than last year.
Why? Because I do not give up. I don't believe that it's over. Only last night I was talking to my daughter and I said, listen, Aditi, I have taken a job which is so demanding. Students can bring anything to me and expect me to answer like I'm an Englishman or something. Where did it all start? I was watching a video and there was an expression, bite me. I'd never heard that expression before. I had never heard that expression before. My daughter had. She had heard that because, she's young. She watches a lot of young stuff, I spend my time watching more meaningful stuff. So bite me is a very informal expression, which some people will use in a very, very funky, informal situation. It's a US expression, okay? So people from the US will use it. So Aditi might have come across that when she was watching some of those American shows, maybe. So when you are annoyed with somebody, you say bite me. Basically, I wanted to understand कि bite me क्यों बोलते हैं वो, क्या है इसका एक्सप्रेशन. तो बाद में मुझे रिसर्च करने पता चल गया, bite me आधा अधूरा है, पूरा bite me in my ass. तो वो पूरा नहीं बोल के खाली क्या बोलते हैं, bite me. जाहिर सी बात है, रूड है. कुछ लोग अपनी माँ को भी बोल देते हैं गुस्से में bite me, ठीक है. तो उनको नहीं पता होता है, इतना ज्यादा सोचते नहीं, बस उन रूड है बोलना. And the mother should feel offended. So there was a comedy video. There was this guy, what is his name? That black man with a mustache and the way he laughs. He does a lot of comedy videos. Okay. Steve Harvey, right? So Steve Harvey, yeah. So it was his stand-up comedy show where he used this, thing. He was telling this story, comedy he was doing. And there he brought up this bite me, a son said bite me to his mother, and another mother was, she started beating her son that, look, you never say bite me to me, okay, like that. So I got curious. I said, why it is so, because bite me didn't sound rude to me. So I wanted to understand. As a teacher, I always take more interest, keener interest, deeper interest in things, so that when my students ask me questions, I'm ready to explain. I'm ready with an answer. So I went into the detail why bite me is offensive, because I don't see bite me should be offensive. Then I found out that actually it is a short for bite me in the ass. So that's why it is offensive. So yeah, the point is stay close to English if you want to improve your English. If somebody wants to improve their Hindi, they should be close to Hindi. They should spend time with Hindi. Only then they can improve their Hindi. Doing the other way around, translating Hindi into English is not going to help you in any way, because English is an independent language. You can have, when you have done your grammar lessons and everything so well and you're very good, you can do translations. You can also translate one of those, classic stories in Hindi into English. You can do it. I can write my own translation of a Hindi story into English, right? So what was the point of the whole class? The Hello, point was sir. to tell you that try not to learn Hindi ka English. Learn English. Don't learn Hindi ka English. Yes, my dear. I'm really not free. He text to you. He texted to you. I'm not. I'm not. No, I'm really not free. Can I said, sir? I don't have time nowadays, and I in my life, in my daily life, I have lots of things going That's on. unnecessary. Yeah, a lot of things are going on in my life these days. Yeah, a lot is happening in my life these days. Okay, sir. That's it. A lot Sir. is going on in my life these days. Okay, sir. Yeah, there are so many ways to express the same idea. The Actually, more sir, you listen to English, the I more want to. naturally you express these things. Yes, sir. Yes. Actually, sir, when actually, sir, I want to text. I want to text like that. That's why, sir, I thinking this type of sentences when I see his No problem. sentence. Fine. Absolutely fine.
Okay, people. So, what are we gonna do? Are we going to do the main book or the practice book? Yes. Sir, I uh, 2 4 days ago, I am in Bihar. 2 4 days, no, a couple of days ago. 2 4 दिन couple हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में couple of days बोलते हैं. आपको पढ़ाया couple गया है couple of couples hours. of yes sir, couples of A days couple of ago. days. A couple of days. A couple of Some days days ago. Some days ago. A few days ago. some days ago, couple of days ago, I am in Bihar, and there I there was. is my I was. I I was. I was was in. I was in Bihar, and there was my cousin, and I asked to him for I English asked him. language. I I asked asked him. him. I asked him English language, but sir, they told me there was They or no he or he and she all sir, they. four They. four four children. Yeah. 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 Yeah, they told me, sir, there wasn't any teacher for English language, and Where is the that place? headmaster said, uh, "Don't worry, this is not necessary. You will got sarkari naukri in future, government job. That's why you don't have you didn't need you you Don't need d- English. yeah." English. So where is that place, Faizan? Mm, mm, Kurtha, Kinjar, Is it? Kurtha, This is Kinjar, in Bihar. Jahanabad, and Okay, I Gaya. don't Jahanabad. think it is easy to get a government job without knowing English these days. Yeah, yeah, you are Yeah. right, sir. And sir, You need to learn they translate. told me, sir, they told me Grammar, sorry. when when Grammar. when they Not in uh, every job. when they gave examination, when they set in examination hall for English language, all teacher stop them to write any sentence, and they told him they told all the student, don't write anything, I will pass you. The Mm. And problem is in Bihar, they sir. gave English. 43 marks for passing marks, and I shocked, sir, by knowing this thing. Sir, they passed every year, but they didn't receive any result. Yeah, that is happening in Bihar in Sarkari school. That's English is not True. necessary. Sorry, compulsory here. So they don't. Your parents also don't force you to mm, study English My and all four cousin, I gave him opportunity to join your class if they want, and I said, you all attend the same class, but don't talk to and don't ask to sir, all four guys, only one join and only one who asked the question. And Mm-hmm. I think they will join. I don't know, but they said Okay. me, okay sir, okay, bhaijan, Mm. in this month we received some money, after that I will Mm. talk to you. Mm. And I actually said, I don't see them, I didn't meet them 10 year or 12 years, since 12 years, and suddenly Okay. I met them. Then I realized, and I very shocked, sir, about government school in Bihar. Yes. yeah, it's really happening. Yes, it is difficult. The situation is not very And good sir, for village.
Sir, if they want to join your class, sir, please cooperate them, sir. Okay. I know They what you are mean. four. Yes, sir. They are four. Two sister and two brother. Mm, Yeah. I know what you mean. I'll do what I can. Yes, sir. If they want to join, sir. Okay. If they don't Sure. have to in curiosity to learn or join the Mhm. English class, then I Mm. don't have I don't give him any Can pressure do nothing. or any Can do yes, nothing. sir. Yeah. Yeah. Nothing. Yeah. Absolutely. Because I know, sir, you teach all the student who wants to learn English. Yeah, that's one Yeah, weakness I yeah, have. I yeah. Yeah. pressurize people. Yeah. All right. So thank you again, Faizan, for spreading the word about the class. And it's really, really something I appreciate. All my students, you guys are doing a great job of spreading the, name of the institute, spreading the word about the institute. And yeah, now listening to this conversation that we were in the middle of it, let's carry on. Different generations can we look forward to? Auntie Emma, are you having a party for your birthday? Oh, I don't know, Harry. I really don't want to think about my birthday. Come on, Emma. It's a special birthday. We've all got special birthdays this year. Harry's going to be 10. Just the closing comment about that translation. So let's have a very simple Hindi sentence. भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है. मम्मी भूख लगी है. Right? I'm hungry. Mummy, Very common I'm sentence. hungry. मम्मी भूख लगी है. What is the translation? Mummy, I'm hungry. So why did you translate with I am hungry? Because when you speak English, you have to stick to English rules. You start your sentence with a subject. You use be verb with an adjective. I am hungry. But when you speak Italian, you don't follow the English grammar. You follow Italian grammar. Italian grammar says, if you want to say I'm hungry, you have to say, I have hunger. I have hunger. And remember, I have hunger is English words, but I have to translate it in Italian. O fami. O fami. Fame, fame. F-A-M-E. O fame. O fame translates into I have hunger. I have hunger. It translates literally. O means I have. O, H-O, I have. Fame. O fame. Fame is a noun. O fame. I have hunger. अब कोई इंग्लिश बोलने वाला इटालियन बोलने वाला इंग्लिश में बोले आई हैव हंगर, आई एम हंग्री की जगह मम्मी आई हैव हंगर, तो वो सही है उसके लिहाज से, इटालियन के लिहाज से, क्योंकि उसके लिटरली उसने बोला है आई हैव हंगर ओ फामे. तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं इतनी लैंग्वेजेस इसलिए सीख रहा हूँ, ये सारी चीजें करो ताकि मैं अपने दिमाग को एकदम क्लियर रखूं और आप लोग को कन्विंस कर सकूं इससे एग्जांपल्स दे करके फटाक से कि कैसे अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, आपको फॉलो करना उस लैंग्वेज को. हिंदी में है मुझे भूख लगी है, भूख लगी है. इंग्लिश में आई एम हंग्री, और इटालियन में है आई हैव हंगर ओ फामे. आई फामे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आई फामे मीन डू यू हैव हंगर, भूख लगी है. तो हिंदी में भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, तुम्हें भूख लगी है, भूख लगी है जिसका दूसरा, मुझे तुम्हें चेंज करना पड़ा, मुझे और तुम्हें. अब सोचो तुम्हें, तुम भूख लगी नहीं, तुम्हें भूख लगी है. करेक्ट हिंदी क्या होती है?
तुम्हें भूख लगी है। बेटे तुम्हें भूख लगी है क्या? शुद्ध हिंदी हुई ना, जो जयपुर के लोग बोलेंगे, राजस्थान के, दिल्ली के लोग बोलेंगे, बेटे तुम्हें भूख लगी है क्या? तुम्हें भूख लगी है। ये तुम्हें कौन से रूल के हिसाब से चेंज हो रहा है? तुम से तुम्हें में बता सकते हो तुम हिंदी ग्रामर के हिसाब से? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि तुमने इसको हिंदी ग्रामर से नहीं सीखा। तुम भूख लगी है बोल सकते हो? नहीं, तुम्हें क्या बोलना होगा? तुम्हें भूख लगी है। तुमको भूख लगी है स्टैंडर्ड नहीं साउंड करता, बोलने वाले बोल देते हैं तुमको भूख लगी है, राइट? लेकिन नेचुरल करेक्ट हिंदी क्या है? तुम्हें भूख लगी है। अगर एग्जाम में लिखना होगा, चुनना होगा, तो दोनों में से किसको चुनेंगे करेक्ट? तुमको भूख लगी है, तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें भूख लगी है। तुम से तुम्हें बनने का क्या पैटर्न है? कौन सा ग्रामर रूल है पता है तुम्हें हिंदी में? लेकिन जो हिंदी सीखता है उसको ये सीखना पड़ेगा कि किस हिसाब से ऐसा करना पड़ रहा है, यहाँ पे कौन से रूल्स के हिसाब से करना पड़ रहा है। एंड दैट ए हिंदी टीचर कैन टीच। रूल वो हिंदी वाले बता सकते हैं। हम लोग एज ए नेटिव स्पीकर ऑफ हिंदी, हम लोग किसी को बता सकते हैं कि देखो तुम्हें भूख लगी है बोलना चाहिए। क्यों, कैसे नहीं बता सकते हम लोग? तो वैसे ही मैं एक टीचर हूँ इंग्लिश का, मैं बहुत सारे रूल्स भी बताता हूँ क्यों होता है, कैसे होता है, ताकि आपके दिमाग में, आप बड़े हो चुके हो ना, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे क्यों होगा, कैसे होगा। सिर्फ एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन जो आ जाते हैं भारत में रहने के लिए 2-3 साल, ऐसी कई लड़कियां हैं फिल्म इंडस्ट्री की जो भारत से बाहर की हैं, दे आर नॉट इंडियंस, they lived in India for 2-3 years, now they're speaking good Hindi. There are lots of people on YouTube, they have their channels, you know, they are foreign girls but they have lived in India for 2-3 years and now they speak good Hindi. तो उन्होंने हिंदी सबमर्जन से सीख लिया, यहाँ रह के सीख लिया, उन्होंने कोई ग्रामर का टेंशन नहीं लिया। तो बहुत से तरीके हैं, हर तरीके का लिमिटेशन समझो, उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज समझो और फॉलो करो चीजों को। हिंदी के वर्ड्स के साथ चिपक के इंग्लिश नहीं सीख सकते। अच्छा एग्जांपल था ना ये वाला, भूख लगी है। भूख लगी है, कोई लगी का इंग्लिश ढूंढना शुरू करे इसकी इंग्लिश करने के लिए, वो कितना अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। और हंगरी मतलब तो बोले भूखा होता है, भूख कैसे बोलेंगे? हंगर से बोलेंगे। तो मुझे बड़ा मजा आता है ये सब कंपैरिजन करने में। आई एम हंग्री, आई हैव हंगर इटालियन में, ओ फामे। लिटरल ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका दिमाग खुले कि अच्छा लिटरली ये बोला जा रहा है। ओ 6 months? I study 2 days a week, 2 hours a week. Sometimes I don't study at all. I go absent for 1 month, 4 weeks. So I'm not really racing in this. Okay, I'm just taking it as a hobby, and I'm not setting any targets, any goals for myself that next year I'll be fluent. 2 years later, in 2 years time I'll be fluent. No such goals. Sometimes my teacher can be a little frustrated with me that I'm not very ambitious in it, but it doesn't help me to be ambitious. I know it's not my priority, and I have told my teacher very clearly that it's not my priority. I want to do it, but it's not. I don't want to do it as a priority. Whenever I get very busy, my Italian lesson is the first thing I sacrifice, and she knows that. So it's all about being clear about what you want. I am very clear about why I'm doing it. Just to have this kind of examples for you guys. ओ फामे, अब एक इटालियन को आई एम हंग्री सीखने में मुश्किल होती है क्योंकि उसका आदत है क्या बोलने की, आई हैव हंगर। वो जब बोलता है ना ओ फामे, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? आई हैव हंगर। जैसे आप वही कई हिंदी सेंटेंसेस आप ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, जो आप बोलते हैं आई एम सॉरी, अब बोलते हैं आई एम सॉरी ना, आपके मन में क्या चल रहा होता है? माफ कर दे, मुझे माफ कर दो, माफ कीजिएगा, यही चल रहा होता है ना। लेकिन वो है थोड़ी लिटरल ट्रांसलेशन उसका। हाँ ठीक है, उस नहीं, वो भी नहीं, माफी भी नहीं, उसका ट्रांसलेशन होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। अगर बोलना है तो बोलना होगा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि ये भी फोर्स किया हुआ है, सॉरी का वो मतलब नहीं होता है। सॉरी का एक्चुअल मतलब होता है, अच्छा बताओ सैड मतलब क्या होता है? जब आपके अंदर कुछ चल रहा हो, बड़ा अजीब सा फीलिंग, तो आप बोलते हैं आई एम सैड। सैड बोल दो कोई उदास, लेकिन आपके अंदर कुछ चल रहा है तभी आप सैड बोलते हो ना।
आपके अंदर कुछ उल्टा ऑपोजिट चल रहा तो अपने आप को हैप्पी बोलते हो ना। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, आपके अंदर कुछ चलता है तो आप अपने आप को सॉरी बोलते हो, काहे किए हम ऐसा, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वाली फीलिंग चलती है तो आप क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी। तो जाके जब आपसे गलती होती है, आप किसी को बोलते हैं आई एम सॉरी, तो आप बोलते हैं कि मैं मान रहा हूं कि गलती मेरी थी, मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए लोग बोलते हैं इट्स ऑल राइट, क्योंकि आपने एहसास किया। हम लोग थोड़ी ना इतना सोचते हैं, हम लोग तो बोलते हैं आई एम सॉरी, बस रट्टा मारे हुए हिंदी के हिसाब से। लेकिन जब आप इंग्लिश सही में सच्चे माहौल में रहेंगे और सही तरीके से सोचेंगे, आर यू सॉरी भी फील सुनेंगे 10 बार, क्या सुनेंगे? आर यू सॉरी, तब आपका दिमाग खुल जाएगा धीरे धीरे इस सेंटेंस की तरफ। लेकिन आप सिर्फ आई एम सॉरी बन के सुनते हुए बड़े हुए और कभी कोई और सेंटेंस नहीं सुना सॉरी से। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, बस इसके आगे नहीं गया। आई थिंक ही विल बी सॉरी वन डे। हाँ, ही वॉज नॉट सॉरी फॉर वॉट ही सेड, ही वॉज नॉट सॉरी फॉर वॉट ही सेड। जब आप इस तरह के सेंटेंसेस सुनने लगे तो आंखें खुलने लगती है, दिमाग खुलने लगता है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजर, आई हैव ऑलरेडी सेड। लिमिटेड एक्सपोजर विल गिव यू लिमिटेड नॉलेज। Let's continue, shall we? I'm going to be 60 and you're going to be 30. Yeah, Grandad, that's really special. I can't wait to be 10. I'll be in double figures. Ha! You're growing up much too fast for my liking. Slow I tried this yesterday. down. Grandad, I've got a really good idea. Let's have a party for all 3 of us. We'll invite For all 3 of us. all our friends. It'll be huge. I love parties. Okay, Harry, but careful. It's a nice idea, but big parties are expensive. But big parties are expensive. We'll have to talk to your grandma. We'll have to talk to your grandmother. I'm not sure I want to have a party at all. I'm not sure I want to have a party at all. Switch at the fan person. I'm not sure I want to have a party at all. Now learn this sentence. हिंदी में हम लोग ऐसे नहीं बोलते। हिंदी में इसके लिटरल ट्रांसलेशन नहीं बोला जा सकता। बोलिए I'm not sure I want to have a party at all. हमारा तो पार्टी करे का मन ही नहीं, एकदम ऐसे बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? हमारा तो मन ही नहीं है कि पार्टी करे भी। उसने कैसे कहा? I'm not sure I want to have a party at all. अब बोलो तो I'm not sure, मैं निश्चित नहीं हूं, मैं पक्का नहीं हूं। बोल के दिखाओ ऐसे सिचुएशन में, कितना नेचुरल लग रहा है तुम्हें। तो जब तुम्हें आदत डालनी है, लिटरल ट्रांसलेशन करो समझ के लिए, बट एक्सेप्ट हिंदी में ऐसा नहीं बोलते। हिंदी बोलते हमारा तो बने नहीं है पार्टी करने का। कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास। हिंदी वी कैन प्रेडिक्ट कि क्या बोलेंगे यहाँ पे, इजिली वी कैन प्रेडिक्ट। इन इंग्लिश वी से आई एम नॉट श्योर आई वांट टू हैव अ पार्टी एट ऑल। It's all right for you two. You're It's all right for you two, TWO, you two. It's all right for you two. looking forward to your birthdays. I'm not. You're looking forward to your birthdays. I'm not. I'm not looking forward. I'm going to be 30. I'm going to be 30. I can't believe it. I can't believe it. It seems so old. It seems so old. It seems so old. It seems so old. 30. It seems so old. Some people say 30 is the new 20. Some people say 30 is the new 20. 30 is the... अभी सब चीज का हिंदी में एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। हिंदी बोलने वाले भी इंग्लिश में ही बोलते हैं 30 is the new 20। जो पहले 20 माना जाता था, आज 30 को वैसा ही देखते हैं, राइट? जो पहले 20 था ना, आज 30 को वैसे ही देखते हैं। तो 30 is the new 20. But not for me. But not for me. What have I got to look forward to now? What have I got to look forward to now? What have I got to look forward to now? क्या है मुझे look forward करने के लिए? किस चीज के लिए excited feel करें? She's saying, what have I got to look forward to? Somebody who believes that his life or her life is absolutely meaningless, sucks, okay? Then they'll say, what have I got to look forward to in my life? Nothing. What have I got?
to look forward to? Nothing. कुछ है ही नहीं मेरी जिंदगी में जिसके लिए मैं excited feel करूं. A 9 to 5 job in this city. A 9 to 5 job in the city. Is that something to look forward to? A 9 to 5 job in the city. Life is very, very tough for those people. Just a minute. Just a minute. अरे रुको. Do you think I want to be 60? You think I want to be 60? I mean, you're saying in a way like I'm very happy that I'm going to be 60. You've got the rest of your life to look forward. You've got the rest of your life to look forward to. You've got the rest of your life to look forward to. पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हें जिसके लिए तुम एक्साइटेड फील करो. अभी सबका हिंदी नहीं करा था, बड़ा मुश्किल है. जिस तरीके की हिंदी मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, जो हमारी भाषा है हिंदी में, we cannot translate these sentences in a natural way. Why I am saying this? हम लोग बोलते ही नहीं ऐसी कोई बात. हम लोग जो बोलते हैं वो ये है, तो पूरा जिंदगी पढ़ा लो. अभी हम लोग यही बोलते हैं, तुम्हारा आगे तो तुम्हारा सारा जिंदगी पड़ा हुआ है. You've got the rest of your life to look forward to. अभी look forward to का तो कोई ट्रांसलेशन आया नहीं वहां पे. कुछ लोग चिपक जाते हैं इसी से. उनका खुद का इमेजिनेशन इतना पुअर होता है, वो महसूस नहीं कर पाते कि लुक फॉरवर्ड टू ना बोल के भी बोल दिया मैंने कुछ और तरीके से. मैंने बोला तुम्हारा पूरा जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ा है. तुम्हारे सामने पड़ा है मतलब क्या? जिसके लिए तुम पॉजिटिव फील कर सकते हो, राइट? एंड लुक फॉरवर्ड टू मतलब टू फील पॉजिटिव अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. तो जो तुमने कहा तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है. यू हैव गॉट योर होल लाइफ टू लुक फॉरवर्ड टू. ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू जरूरी नहीं कि यही बोले, मैं आपको दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ. यू गॉट योर होल लाइफ अहेड ऑफ यू. ओके, ऐसे ही बोल सकते हैं. तो my point is, when we listen to English, we don't judge English by the standards of Hindi. We want to understand English in English. That the lady said that I am not excited about my birthday because I'm going to be 30 and 30 seems very old. However, there are some people who say 30 is the new 20, but I'm not one of them. I don't feel that way. Then the father reacts, beta, hang on. What are you complaining about? You're complaining that you're going to be 30. So you think I'm happy about being 60? Turning to be 60? No. You've got your rest of your life to look forward to. What have I got? अब तो मेरी जिंदगी लगभग खत्म. किस चीज के बारे में excited feel करें? Too. Yeah, but Dad. Yeah, Dad, but Dad. Now, see the argument. Yeah, but Dad, you've got a happy life. You're happy with your life. You're happy with your life. You're happy with your life. You have lived your life. You have children, wife, job. You have your 2 children. You have your 2 children. And your grandchildren. Stability. And you love your job. And you love your job. You're happily married. What more do you want? Mum loves her job too. Okay, we like our jobs, but being a doctor isn't easy. But being a doctor isn't easy. अभी इसको ग्रामर से समझाना बड़ा मुश्किल होता है. ऐसा सेंटेंस, being a doctor isn't easy. He's a doctor ना. He's saying being a doctor isn't easy. अब किसी लड़के को, किसी स्टूडेंट को तुमने इंग्लिश का एक्सपोजर नहीं दिया, ठीक है? मान लो तुम्हारे साथ 2-3 महीने से तुम उसको हिंदी में पका रहे हो, सुना रहे हो कहानी, जैसे मैं सुबह 9:30 बजे सुनाता हूँ, ठीक है, ग्रामर क्लास में, यूट्यूब पे हिंदी में सुनाता हूँ कहानी. उसमें मेरी बात सुनने से किसी के दिमाग में कितना इंग्लिश पैदा हो जाएगा? मैं बोल कौन सी भाषा रहा हूँ? हिंदी. वहां पे of course they will learn very little, right? They will learn the rules that I'm explaining, the concepts I'm explaining, but they will not develop any skills with that class. They will have knowledge. The purpose is to share knowledge of English, not skill in English. Unless until people clearly appreciate the distinction between knowledge and skill, they are always going to be confused. One can have a lot of knowledge and very little skill. One can have very little knowledge and good skill. It's possible. And you want to have knowledge and skill both.
because that gives you an unmatchable, or something that can give you a big advantage actually. Because you see, you're not going to match those people who have always spoken English. Can you compete with those guys in their field? I'm talking about people in Patna, Mumbai, Delhi, who were in class 6th and spoke very good English. Then they got into class 10th and they spoke very good English. Then they passed matric and they spoke very good English. Can you match them? Their fluency, their style, and their comfort level ever? Then my answer is no, never, ever. Because for them, English is just another language. It has always been. You guys are playing a catch-up game. Appreciate what you're doing. Once you know what your job is, then it becomes easier. You want to be able to at least appreciate English in a way that you do not misunderstand what is being said. You want to take your English understanding to that level where you read a text in English and you do not misunderstand any part. That's all. That will be the highest you want to be able to do. That's the best thing you can do. That you read a text, a passage, a paragraph, or a story in English, and you do not misunderstand any part. Misunderstand, I'm saying. You don't understand, that's okay. You don't misunderstand. I am fed up with those people who claim that they understand English, teach English, and misunderstand a lot of things. Forget about not understand. Misunderstand. Because they spread their misunderstanding. Not understanding is okay. You will search. But when you misunderstand, you spread your misunderstanding. Creates bigger problems. So what have you, everything, you love your job and everything. Yeah, being a doctor isn't easy. Being a doctor is stressful. Very stressful. Becoming a doctor and being a doctor, are they the same thing or different things? Different things. You will say becoming a doctor is not easy because you're not a doctor. You're talking about becoming a doctor. Even if you become a doctor, when you say becoming a doctor isn't easy, you're talking about the process through which you become a doctor. But when you say being a doctor is not easy, then you're talking about the job is demanding, not getting the job. Do you understand the difference? Now, you guys are lucky you're sitting here. Again, I will say very proudly, you guys are lucky you're sitting here and you easily appreciate the difference between becoming a doctor is not easy and being a doctor is not easy. Becoming a doctor is not easy is about getting the job, and being a doctor is not easy is about doing the job. The job is demanding and getting the job is difficult, then becoming a doctor is difficult, right? You guys can all appreciate this. All my online students as well understand why I'm talking about it, because I have heard this question. I've been asked this question many times. Difference between become and be. Become talks about change. Be talks about state. So when somebody is the only son of his parents, what will you say to them? How does it feel, becoming the only son or being the only son? Right. And being an English language teacher, yes. For me, yes. Being the silent isn't easy. Sorry, Imrana beta? Being the silent isn't easy. Being silent. Being silent, yeah. Becoming is change. Being is a state. Let's continue. And teaching teenagers is not easy for your mum either. And teaching young teenagers for your mom is not easy either. Again, to is used when you are adding another positive statement, then you use the word TOO2. And in the same place, when you're adding a negative statement, then you don't add to, you use the word either. For example, I'll say, being a doctor is challenging and teaching young teenagers is also challenging. Being a doctor is challenging.
being a doctor is challenging, and teaching young teenagers is all difficult too. Now I'm using negative sentence, okay? I said being a teacher, being a doctor is challenging, and teaching young children is not easy either, because this is negative idea that I'm adding, okay? So here I will use the word either. If one has not studied these things, if one has never noticed these things, one is going to be wrong. There's no surprises here. Why would you get it right? Because you have to, okay, you don't have to sit in Vinay Shankar Soni's class. Anywhere you are on your own, you have to observe this to get it right. And young kids normally do it. When kids are young and they're sharp, and if they're getting the right kind of exposure, they can do it all on their own. They have the ability in them. They don't always need a teacher. They usually need a teacher when the time is gone, when they could do it on their own. And when the time is right, when they're young kids, then the problem is parents, because they're ignorant too, they do not know how languages are learned. So they do what? They send them to translation classes. They send them to grammar classes. Young kids like 7, 8, 9, 10, they attend classes for English, What do they study there? Except for the right thing, they do everything else. What is the right thing? Exposure. So I am going to share a video, YouTube video. Please share this with all your cousins, brothers, friends, sisters, children in your family. Ask them to listen to the story. That's it. This will be a simple story. They'll listen to it and they'll learn from the story. You guys can learn so much from that story as well. Except for doing the right thing, they do everything else. Just the one thing that they should do, they don't do that one. That is listening. I'm going to share that today with you guys. We'd like to retire soon. We'd like to retire soon. We'd like to. We want to. We'd like to retire soon. But that's not possible for another That's not possible for another few years. few years. For another few years. That's not possible for another few years. Now ये phrase सुनो, another few years. कभी मुंह से नहीं निकला होगा. अगले कुछ और सालों के लिए. अगले कुछ और. That's not possible for another few years. अब इसकी हिंदी करें. ये पॉसिबल है नहीं अगले कुछ सालों तक, ठीक है? अगले कुछ सालों के लिए भी पॉसिबल तो है नहीं कि रिटायर हो सके. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अनदर फ्यू इयर्स. अब बताओ अनदर और फ्यू की कभी ट्रांसलेशन अगले कुछ कर पाएंगे हम लोग? तो यही इमेजिनेशन चाहिए इंसान के पास, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस कि मुझे जो रटवाया गया है उससे बाहर निकलें. अनदर फ्यू, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अनदर फ्यू इयर्स. प्रॉब्लम क्या है? मैं आपसे कहता हूं आप ऑडियो फाइल सुनोगे, 50 बार सुनोगे, ये फ्रेज आपके ध्यान में रह जाएंगे. आप 5 बार सुन के छोड़ दोगे, नहीं रहेंगे. I'd love to go travelling again. I'd like to go traveling again. Like I did when I was 23. Like I did when I was 23. I want to do that. Me and my... I want to do that. और एक चैलेंज छोड़ रहा हूँ, एक पजल छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए क्लास, इस कोर्स में, इस लेसन में आज. There will be something I will not explain. मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको खुद ब खुद ऑब्जर्व कर ले. और मैंने एक बात की थी, आप बताएंगे मुझे कि सही क्या था, गलत क्या था. मैंने एक क्वेश्चन भी पूछ दिया है, उसका आंसर भी आएगा. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, छोड़ दूंगा आपके ऑब्जर्वेशन पे. My friend Zach are going to travel the world together. We're planning it now. We're planning it now. Where did you go, Auntie Emma? Where did you go, Auntie Emma? Where did you go? I went with a friend from university, and we went with friends at university. All over the world. Australia, New Zealand, South America. We even spent 3 weeks on the Galapagos Islands. We even spent 3 weeks on the Galapagos Islands. We even spent 3 weeks on the Galapagos Islands. That was amazing. We had a fantastic time. We were away for a whole year. Oh. We were away for a whole year. We were away for a whole year. अब देखो क्या होगा. तुमने कह दिया we were away for a whole year. मैं बार बार हाईलाइट करता हूँ प्रॉब्लम टीचिंग में, ताकि स्टूडेंट्स की गलती नहीं होती.
टीचर ने दिमाग में डाल दिया कि होल के पहले द लगा होता है। अरे भाई तब लगा होता है जब वो डेफिनिट होता है, यहाँ डेफिनिट नहीं है। इसने कहा आई वी स्पेंट अवे, वी वर अवे फॉर अ होल ईयर, एम्फेसाइज करने के लिए था ये, पूरा साल हम लोग बाहर रहे। वी वर अवे फॉर अ होल ईयर, ए होल ईयर, वी वर अवे फॉर अ होल ईयर। अब कुछ लोग वो डाल देंगे दिमाग में बच्चे के कि द लगता है हमेशा, अब वो ए देखेगा तो परेशान हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि बच्चे में आपने डाल के गलत किया, उसके साथ कंफ्यूज किया, आपको डाल के कि द क्यों लगेगा वहां पे, क्यों बोला आपने? आपको द बताने के साथ साथ बताना चाहिए था कि ए भी लगता है। तो ये प्रॉब्लम है। मैं जब ग्रामर पढ़ाता हूँ तो ये प्रॉब्लम आती है कि इतनी ज्यादा बातें बताने के लिए लड़के ऊपर नीचे में आ जाते हैं कि इतना सारा जानना पड़ेगा। तो फिर वही 2 लाइन बोल दो, 1 लाइन बोल दो, वो खुश, क्योंकि 10 क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। लेकिन 2 क्वेश्चन में तुम परेशान बहुत भयानक होने वाले हो, लगेगा ये कैसे गलत कर दोगे। तो शॉर्टकट के लिए ठीक है कि भाई कोई छोटी सी बात बता दू, 2 लाइन बता दू तो चलेगा। बट व्हाट अबाउट एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज? क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस किसी के सामने ले जाओ, किसी ऐसे ग्रुप में ले जाओ जहां लोग पढ़ाई करो जॉब के लिए, और उनको ये सेंटेंस दो, उसमें से कई लोग कहेंगे यहाँ एक जगह द कर दो, द होल कर दो। Wow! The Galapagos Islands! Did you see the tortoises? Of course we... Did you see the tortoises? हम लोग जिसका टर्टोइज बोलते हैं ना, वही प्रोनाउंसिएशन ऐसे किया जा रहा है, जरा देख लीजिए आप। गिव मी अ मिनट। हम लोग क्या बोलते हैं? टर्टोइज बोलते हैं ना, उसी का एक और प्रोनाउंसिएशन है। यस, टोटस। Tortoise. देखा Tortoise. है ना, टोटस। Tortoise. ओके, या जिसको हम लोग क्या बचपन में सीखे थे पढ़ना, आप सुनिए, वो भी सुन लीजिए। Tortoise. ओके, दूसरा वाला, वेट फॉर अ सेकंड, गिव मी। tortoise, tortoise, अच्छा, वो वाला प्रोनाउंसिएशन प्ले नहीं कर पा रहा हूं मैं। टोटोइज इज आल्सो करेक्ट, इट्स नॉट रॉन्ग, ओके। टोटोइज, tortoise, टोटस, tortoise, टोटस। हम लोग को बचपन से क्या सुनने की आदत है? टर्टोइज। क्या बोलते हैं हम लोग, है ना? लेकिन बोलना करेक्ट है टोटोइज, ओके, टोटोइज नॉट टर्टोइज, ओके। क्या बोलना चाहिए? या टोटोइज और टोटस, ओके। डिड यू सी tortoises plural? Did you see tortoises? We did. Fantastic! I'll tell Zach. He won't believe it. Ah, I'll tell Zach. He won't believe it. yes, wonderful. But then it was difficult when you came back. But then it was difficult when you came back. After spending 1 year away, when you come back, you feel bored in your life. Yeah, it was difficult to start studying again. It was difficult to start studying again. It was difficult to... And Dad, you know I believe it. Ah, yes, wonderful. But then it was difficult when you came back. Yeah, it was difficult to start studying again. And It was difficult to start studying again. Dad, you know I'm still not sure I want to be a lawyer. Dad, I'm still not sure I want to be a lawyer. Dad, I'm still not sure I want to be a lawyer. अगर आप बोले मेरा मन नहीं कर रहा कि हम जाएं फिल्म देखे, लेकिन तू लोग चल जाना, I'm not sure I want to go to the cinema. ये भी एक तरीका है इंग्लिश बोलने का। हालांकि हिंदी में I'm not sure के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हमारा मन नहीं कर रहा, हमारा नहीं लग रहा हम जेबो। Okay, in English you will say I'm not sure I want to go to the cinema actually. I'm not sure I want to go. Why don't you guys go without me, huh? Come on. You've nearly finished your studies. You've nearly finished your studies. You have nearly finished your studies. You have nearly finished your... तुमने अपनी पढ़ाई लगभग खत्म कर ली है, और क्या बोल रही है उल्टा पुल्टा? Come on, Emma. You've nearly finished your studies. Repeat. Come on, Emma. You have nearly finished your studies. You have nearly finished your studies. Sure to get a good job. पता है, बोल दो, हम आ रहे हैं 10 मिनट में। ऐसा बेवकूफ ना समझो कि मुझे याद नहीं है।
ठीक है, कुछ नहीं बदल रहा 5 मिनट में. And then you and John can get married And have And then you and John can get married. babies and on. get a good job. Not sure I want to be a. It was difficult to start studying again. And Dad, you know I'm still not sure I want to be a lawyer. Come on. You've nearly finished your studies. You're Hindi sure bolo. to get... You have nearly finished your studies. तुम्हारा पढ़ाई भी लगभग खत्म हो गया है. Right? You have nearly finished your studies. get a good job. And Get a then good you and job. John can get married and have. You and John can get married. Okay. तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको अक्सर लोग कहते सुनने मिलेंगे पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन स्टडी. गलत बोलते हैं कि सही बोलते हैं? क्या बोलना चाहिए? फोकस ऑन योर स्टडीज बोलना चाहिए. क्या बोलना चाहिए? फोकस ऑन योर स्टडीज. दोनों वर्ड्स इतने ही नेचुरल होने के लिए जरूरी. योर भी चाहिए और स्टडीज भी चाहिए. फोकस ऑन योर स्टडीज. तो अभी वो नहीं है यहाँ पे आपके फ्रेंड, उन्होंने अपने डायरी में लिखा है फोकस ऑन स्टडी. हिंदी के हिसाब से पढ़ाई पे ध्यान दो, वो तो सही लग रहा है, फोकस ऑन स्टडी. लेकिन आपको कैसे समझ में आए? एक तो आप सीख गए सुन करके फोकस ऑन योर स्टडीज. और मैं आपको एक बता दूं कि हर हाल में आपको स्टडीज बोलना पड़ता है. जब नाउन यूज करते हैं तो आप प्लूरल ही यूज करते हैं. स्टडीज ही बोलते हैं पढ़ाई के लिए, स्टडी नहीं बोलते हैं. जब आप कहते हैं कि हम शादी में नहीं जाएंगे, मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, आई विल नॉट गो टू द वेडिंग, माई स्टडीज विल बी अफेक्टेड, माई स्टडीज विल बी अफेक्टेड. स्टडी विल बी अफेक्टेड नहीं बोलेंगे. तो पढ़ाई के लिए आप हमेशा स्टडीज बोलते हैं. अब बताएं, अगर आप इस क्लास का हिस्सा नहीं है तो क्या आपके कान में कोई फरिश्ता के ये बात बोल के जाएगा आपको कि आपको स्टडी बोलना नहीं है, स्टडीज बोलना है? या तो आपकी शार्प ऑब्जर्वेशन हो कि एकदम हर बार आप इतना गौर से देख रहे हो कि स्टडीज बोल रहा है. करते हैं कुछ लोग को टीचर की जरूरत नहीं पड़ती. दे स्टार्ट अर्ली व्हेन दे आर स्मॉल. their parents, their teachers give them the right kind of exposure to English, and they have good observation as well, and they notice all these things, and they never make mistakes. And there are those like Nikhil, he speaks English fine to most people's perception, right? He speaks fine, he speaks fast and everything, but then everywhere there is margin for improvement. How come? Because he has not done all that observation on his own, and he's never had somebody guiding him. Poor chap. So approach it the right way. Listening to the stories that I'm talking about can do the job of a teacher. क्योंकि बच्चों को जो कान में पड़ेगा ना, उसकी आदत पड़ जाएगी. सही स्टोरी सुनाइए जिसमें अच्छी इंग्लिश यूज हो. नंदन चप्पा का टाइम गया. Okay, you have got internet, you've got YouTube, you've got so many people making such wonderful stories, videos to help you learn English. What they need from you, subscription, that's it. So guys, wrapping up now, I have to go to the doctor. My daughter is a little sick, and I'll be back tomorrow. Okay, we will continue our class tomorrow the same way. Revise the lessons. Maybe I'll try and share the recording with you guys in the group today. Bye-bye, everyone. Take care. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye-bye.